India, right? And lastly, I'm also proud that we started today on time. Okay, so we can do it. So to move this programs forward, I want to introduce our MCs for this evening. They are our youth members. So we have Karina Jolly, Ashish Prasad, and Anupama Sethuraman. Please give them a big round of applause, and we'll get our programs started. Thank you. Thank you all again for coming. Following tradition, we will start with the American Indian national anthems. These are presented by Ari, Aisari, Meena, Meghana, Manasa, Shristi, Harani, Anvi, Fida, Nitish, and Rudakshi. Everyone please rise. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि गंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। Kids, thank you for leading the national anthems. Next, our guest speaker, who is a longtime member of our community, will talk to the kids about the importance of Indian independence. Please welcome Uncle Sharmaji.
Namaste. What I'm going to talk about is mostly for the benefit of our younger audience, children in particular. And please listen to it carefully. There may be a test afterwards. So let me start with why are we called Hindus? There's a river which starts in the Himalayas, goes northwest around Kashmir, through Kashmir, comes down the hills bordering Afghanistan, Pakistan, flows into the Arabian Sea called Sindhu. The ancient Zoroastrians, people in current day Iran, did not have a sound sa in their language, so they called that river Hindu. So people living on the east side of the river became Hindus. Then comes Alexander, around 325 BC. The Greeks called the same river Indus, so people living on the other side became Indians. Then I'm jumping forward to the British. They wanted to justify the occupation of India, and they coined the word Indians, which means heathens, uncivilized, barbarians. If anybody has a chance to read some old dictionaries, I read one in the Bodleian Library at Oxford, and the translation still says, the old dictionaries, the translation still says barbarians, uncivilized heathens. So be it. So then the question comes, what happened? Here is the river Indus or Sindhu, and then there is the river Ganga, and the tributaries to all of these rivers. The plains in between these areas are so fertile, with little effort, people could produce a lot of food. They had a lot of free time at their hand from the Central Asian region, from North Afghanistan, Uzbekistan. People continuously used to come to this place, live happily, and the locals were welcoming. They would welcome anybody. So there was no conflict, nothing wrong. The civilization that grew out of it, which now the rest of the world calls Hindu civilization, had some unique features. The ancient culture is Vedic culture. Just to give you a taste of what typical is in the Vedic prayers, Om Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishwataha. May noble thoughts come to us from all over the world. So they were very open-minded. They were willing to accept anything from anybody. So they welcome anybody. Then I come to Alexander again, 325 BC, when there was surety that after he had conquered Iran, he is definitely going to invade India. Pururaj, the king on the border of Iran and now Pakistan, he wanted to do something about it. Chanakya, a great teacher in Takshila, he tried his best to unite the country so that Alexander cannot dare to attack India. Did it happen? No. Chanakya walked all the way from Takshashila, which is now border of Pakistan, Afghanistan, all the way right up to Patna, current day Patna, Patliputram at that time, asked the Nanda king, let's unite to keep Alexander out. It did not work. Pururaj was defeated. There was hardly any war. And then Chanakya, through his own policy, he prepared a small army under the leadership of Chandragupta, whom he trained himself. And they defeated Alexander. First time in his life, Alexander was defeated. Even afterwards, Chanakya tried his best to unite the country. Nothing really happened. Waves of people still kept coming. 30 seconds. So then we go through the Muslim period, lots of atrocities. Why they could win over everything? Because our kings were fighting against each other. Then I come to about 1780, British East India Company had started, and now suddenly what happened is the Indians are still fighting. Only the kings are fighting until now. They were quarreling with the British, wanted to protect their kingdoms. 1857 was the first time when again kings got together and they fought with the British. Suddenly, Indian National Congress is formed by a Scottish military officer, and at that time only the elite could join in. Lal Bal Pal, they were the main bearers of this campaign. In 1915, Gopal Krishna Gokhale brought in Mahatma Gandhi on the stage. Mahatma Gandhi's biggest contribution was that he took this movement to the masses.
And then there was so much that our leaders had to go through, our martyrs had to go through, and somehow, after a lot of struggle, in 1947, we acquired independence. So even today, if you look at the history, why did it happen? We were never united. That's why anybody could come and conquer us. So even today, we are not really united. Sardar Patel, when India was made independent, he had to confront 13 provinces and 793 princely states. He wanted to unite all of them together, and he did. His vision was to divide the country in 5 parts: north, south, east, west, and central. It didn't work. We are still fragmenting. So here is the challenge for the youngsters. Please think about it. What can we do to make this great country even greater? We have to unite. Let's learn from the Germans. East and West Germany has united. Angela Merkel, she's a great leader from East Germany. So think about it. How can we unite the country and keep moving forward? Thank you very much. Please give another round of applause for Uncle Sharmaji. Keeping our theme of university, we will begin the performances with Vande Mataram. This nationally recognized song was taken from Bankim Chanda Chattopadhyay's Bengali novel, Anandamath. This song will be performed by Ashish, Sudiksha, Varsha, Krisha, Shriya, Mridini, Manasa, Meghana, Fida, and Meena. कमला कमलदल विहारिणीं
सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् शरलान् सरलान् सुस्मितान् भूषितान् धरणीन् भरणीन् मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् जय हिंद। What a great performance. Let's have another round of applause for them. Our next performance will represent Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is the most populous state in the Republic of India, and it was formed in 1937. It has a very rich historical background in that it was the site of very many important ancient Indian empires, as well as being bordered by two very important rivers, the Ganges and the Yamuna. Representing the state of Uttar Pradesh, Tanuja will perform a traditional Kathak-based dance, choreographed by Aswari Deshmukh. Kathak is a classical dance form that evolved in northern India and has its roots in Uttar Pradesh. Please welcome Tanuja.
बांसुरी बाज रही धुन मधुर कन्हैया फेरत जावा बांसुरी बाज रही धुन मधुर कन्हैया फेरत जावा बांसुरी बाज रही। Thank you so much for that wonderful dance. The first performance representing the North Indian region will be a dance performed by Meena, Anusha, Meghna, and Rudrakshi. Please welcome them now. Now, how great was that performance? I thought it was really great. Right, guys?
Our next act will be representing the North Indian state of Punjab, which was formed in 1947. This will be a Hindi patriotic song commemorating the lives of Indian soldiers who died during the Sino-Indian War. Please welcome Raj Kohli singing "Ae Mere Watan Ke Logo." Okay, let's put the light on. Let's see. ऐ मेरे वतन के लोगो, ऐ मेरे वतन के लोगो, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Thank you. Before I go, I wanted to just say this, that I'm going on a world bicycle tour to promote world peace in about a month and a half for about 2.5 years, 30,000 kilometers, 25 countries. Please support my efforts. It's not going to be easy, but I would appreciate the support of everybody here. Ask your friends and ask them to ask their friends. Thank you. The next performance will be a North Indian dance performed by Basis Oro Valley students, Maeve, Linda, and Kava, all members of Bollywood BOV, a club which creates diversity through spreading Indian culture, teaching self-confidence, and promoting awareness of issues in the community through dance. This performance was choreographed by Kava Jha and taught by Kanak Jha. Please welcome them now.
Thank you for the wonderful performance. Our next set of performances will be representing the state of West Bengal. West Bengal is a state in eastern India which borders Bangladesh. It was the site of the epic Maurya and Gupta empires. Representing this state will be a dance including Aditi, Rohini, Kira, Nanika, Asha, Meghna, Manasa, Ziba, Dia, Harini, Fida, and Mitali. Please welcome them now. Bye.
That was phenomenal. Let's give them another round of applause. That was really good. Okay. The next performer is Shrishti Mishra, who will be singing a Bengali traditional song. The song was written by D.L. Ray, who was a Bengali poet, musician, and playwright. Let's welcome Shrishti now. Namaste, I am Srishti Mitra. I will sing Dhanodhanni. It is a patriotic song composed by Bengali poet Sri Dijendralal Roy. ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে। ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি, পাখির ডাকে জেগে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। পুষ্পে পুষ্পে ভরা সাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি, গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধে। তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে, ফুলের মধু খেয়ে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি। আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি,
সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি থ্যাংক ইউ Wow, what a marvelous performance, right? We would now like to present the performances representing Gujarat. Gujarat was one of the sites of the Indus River Valley civilization and is located on the western coast of India. Who doesn't know Garba? Gujarat has produced many brave leaders such as Gandhiji, Sardar Patel, and none other than our Prime Minister, Narendra Modi. To present the culture of Gujarat, we'd like to introduce Parikshit, Varni, and Bhavisha. Let's welcome them now.
घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी। Gathia in the morning, ढोकला in the evening, ઊંધિયું at supper time. આ ગુજરાતીને જોઈએ ખાવાનું all the time. આ ગુજરાતીને જોઈએ ખાવાનું all the time. आपको तो हमेशा खाना ही दिखता है। ओ जान जाना मैं गुजराती दीवाना, खमन ढोकला खा के आराम से सो जाना सनम। वाह वाह, क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही फॉर्म में लग रहे हो। क्यों ना हो, जब से गुजरात को देख के आया हूं उसको भुला ही नहीं पाता। क्या प्रगति की है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सॉलिड, और घूमने की जगह तो देखो, काठियावाड़, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, वाह वाह वाह। रियली, गुजरात यानी गुजरात, ना हो सके उसकी बात। और इतना ही नहीं, खाना तो देखो, हांडवो, खमण, ढोकला અને ભાવનગરી ગાંઠિયા, સુરતી ઊંધિયું, ઘીમાં લટપટ ઘારી, ખંભાતની સુતરફેની, હલવાસન ને ડાકોરના ગોટા, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, पानी। क्यों आ गया ना? आ ही जाए ना, गुजरात तो क्या, लंदन में विमली, न्यू जर्सी में एडिसन, शिकागो में डिवॉन, अरे एलए में जाओ तो आर्टेजिया में भी गुजरात की ही खुशबू। हाँ, आजकल तो सभी जगह गुजराती ही दिखते हैं। डंकिन में गुजराती, मोटल में गुजराती, आजू बाजू आगे पीछे है गुजराती ही गुजराती। गुजरातीज आर एवरीवेयर, गुजरातीज आर एवरीवेयर। रियली, यू कैन फाइंड गुजराती समाज इन टूसान। ऑल करे गरबा और डांडिया, और सभी स्टोर में मिले फाफड़ा और गाठिया। और इतना ही नहीं, गुजराती कभी कोई रेस्टोरेंट में खाने के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहता। इतने भी गप्पे मत लगाओ। सही बात है, क्योंकि जहां पे लाइन होती है गुजराती वहां पे जाता ही नहीं है, और अगले ही साल वो रेस्टोरेंट को अपनी बना देता है, फिर जी चाहे तब खाना खाए। और आजकल तो रेस्टोरेंट में यही, मीटिंग में भी यही बात होती है कि डोंट मेक गुजराती वेट, अदरवाइज ही विल मेक यू स्वेट। और तुझे पता है, अमेरिका में आने वाला पहला गुजराती ही था। कोलंबस, वो कैसे गुजराती हुआ? अरे, अमेरिका में बिना वीजा के आने वाला एक गुजराती ही हो सकता है। रियली, गुजरातीज आर वेरी ब्रेव एंड एवरीवेयर। जहां जहां वसे गुजराती, वहां वहां गुजरात। और आजकल तो अमेरिकन एम्बेसी वाले भी उनको वीजा देने के लिए मना नहीं करते। पता है क्यों? वो क्यों भला? क्योंकि उनको पता है कि हम वीजा नहीं देंगे तो भी वो तो आने ही वाले हैं। और एक गुजराती को वीजा नहीं देने का अंजाम भी वो जानते हैं। एक गुजराती को जब वीजा नहीं मिलता है तो पूरी सरकार बदल देता है, और फिर उसी गुजराती को व्हाइट हाउस और कांग्रेस में बुलाना पड़ता है। Now you are talking about Mr. Narendra Modi. Yes, you got it. पहले गांधी और सरदार, अब नरेंद्र मोदी धमाकेदार। सही बात है, उसने तो पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। क्या उसकी डिलीवरी, क्या उसकी स्टाइल। मित्रों, भाइयों और बहनों, आपको स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं। मैं तो उसका फैन हो गया हूं, फैन। घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी। उस स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। छोटे की
चक चाल चलत जा ए छोरा गांडा થઈ ગયો નથી તો તારો
What a Gujarat performance was that? Next, still representing Gujarat, will be a dance performed by Asha Moni, Sudeshna, Sujata, Monisha, Prachi, and Namita. Let's welcome them to the stage. खनखनाक गोरी के कंगना आज छनननन छनछनाक पायल संग बाजे सर पर चूनर ओढ़े निकले की आज राधिक लहरा लहरा के गोपियों संग कान्हा भी बीच बीच डाल कोई खींच खींचे मुरली से बरसाएगा सुरकरन धरती और वो गगन झूमेंगे संग संग सब पे चढ़ेगा आज प्रेम रंग रंगी गुलाल होगा सोचो क्या हाल होगा नाचेंगे प्रेम रोगी धम 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 धातिला धिदकिट धिला बाजे मृदंग धनाधन धन धनाधन बाजे छम 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 छमाक झांझर झम झम झमाक घुंघरू गम धम गमाक चमक चम चमाके बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे के ढोली तारो के ढोली तारो हे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल हे
Let's have another round of applause for them. We would now like to introduce South India. The first of the South Indian states to go is Tamil Nadu. Tamil Nadu is one of the southernmost states in India, and it contains part of the Indian peninsula. It is known for its long-lasting classical traditions and culture. Performing the folk dance Kumki Soy Soy will be Saras Rakshi, Anvi, Aisri, Fida, Meena, Meghna, Manasa, and Harini. The folk beats and the imposing wind instrumentals displayed in the song bring out the rustic feel from the villages of Tamil Nadu. Our next state is Karnataka, which is located in southwest India. This state housed the Vijayanagar empires. The first performance will be the state song, which portrays Karnataka's position in the community of Indian states. It shows Karnataka's self-respect and dignity from a position of confidence and strength rather than insecurity and fear.
This will be performed by Suma, Ranjani, Mala, Shahana, Ashwini, and our very own ISA President, Pradeep Kadambi. भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदिवनಗಳ ನಾಡೆ जय हे रस ऋषिಗಳ ಬೀಡೆ जय भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಕೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ ರಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ ರಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ ಕಾವೇರಿಯ ವರರಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ ಕಾವೇರಿಯ ವರರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಉದ್ಯಾನ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಉದ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ನಾಮ ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ
जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वनಗಳ ನಾಡೆ जय हे रस ऋषिಗಳ ಬೀಡೆ जय भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते ला 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 ला. Our next two performances will represent Andhra Pradesh. This state is on India's southeastern coast and contains the Tirumala Venkateshwara temple in the southern part of the state. Pranay will be performing a Carnatic solo song with the Raga Kamas and the Tala Adi. Please welcome him to the stage.
sorry about the mess up. Actually, that was Naina and Rudrakshi performing their dance. The music, popularly known as the flute song from the album O Meri Muni, was composed by Remo Fernandez, a musician from Goa. So now Pranay will be performing a Carnatic solo song with the Raga Kamas and the Tala Adi. So let's welcome him now. Namaste. Samba Shivaya Nave Rajita Giri Samba Vimanohara Paratpara Rupakara Sri Samba Shivaya Nave Rajita Giri Nive Guru Daivam Baniye Velanu Sevimduchu Sada Madini Shiva Samba Shiva Yanave Rajita Giri Samba Vimanohara Paratpara Krupakara Sri Samba Shiva Yanave Rajita Giri Paramadaya Nidhivanuchu Marubakana Hrudayamu Mahadeva Mahaprabhu Sundaranayaka Suravaradayaka Bhavabhaya Hara Shiva Samba Shiva Yanave Rajita Giri Samba Vimanohara Paratpara Krupakara Sri Samba Shiva Yanave Rajita Giri Stira Madura Puramuna Varamulo Saguharuni Niratamunu Talachi Samba Shiva Yanave Rajita Giri Samba Vimanohara Paratpara Krupakara Sri Samba Shiva Yanave Rajita Giri Sri Subhakara Sasima Kutadara Jaya Vijaya Tripurahara Shrita Jana Lola Adbhuta Gunashila Krutanuta Bala Patituni Lola Mudambala Ranga Padabja Mulandu Padambulu Jeju Pasupatini Nanamu Dhyanamu Stanamu Panamu Danamu Manamu Abhimanamanchu Kanikaramu Nacharanam Bulukanu Gonu Sutulan Nutula Sarananuchu Samba Shiva Yanave Rajita Giri Samba Vimanohara Paratpara Krupakara Sri Samba Shiva Yanave Rajita Giri Sarasare Kuni Nama Mantram Korina Ninu Padabja Mantram Dasuda Chinni Krishnuni Kidikuni Veyani Chokkana Tuni Namukuni Samba Shiva Yanave Rajita Giri Samba Vimanohara Paratpara Krupakara Sri Samba Shiva Yanave
Now we would like to welcome back our wonderful Karnataka troupe as they perform a traditional folk dance of Karnataka called Kolata. It is the South Indian counterpart of the Gujarati dance Dandiya Ras. This dance is called Challu Vaya Challuvo Tanni Tandana. Please welcome the dancers now. Everyone give a round of applause for that performance again. The state of Kerala is located on India's tropical southwest coast. The kingdom of Kerala Putra was one of 5 alone standing kingdoms during Ashoka's reign. Next up, they'll be performing a song which vividly portrays Kerala's geographical beauty. The performers are Ashamoni, Meghana, Manasa, and Durga Lakshmi. Please welcome them now.
ീരനിരകളാടുന്നൊരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കലമേളം കവിത പാടും തീരം കായലലകൾ പുൽകും തണുവലിയും ഈറൻ കാറ്റിൽ ഇലഞ്ഞാറിൻ മുളയാടും കുളിരുലാവും നാട് നിറപൊലിയേകാമെന്നരിയ നീരിനാൾ പുതുവില നേരുന്നോരിനിയ നാളിതാ പാടാ കുട്ടനാടിൻ നീളം തീരനിരകളാടുന്നൊരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കണ്ണോട് കരിയെഴും മണ്ണുതിരും മനമോ പിന്നിനു വിയർപ്പാലേ മധുമനമോ ഞാറ്റോല പച്ചവള പൊന്നും ചെളിക്കൊലസ് പിന്നിവൾ കലമാറ്റും കളമൊഴിയാൾ കൊച്ചികൾ പകൽ നീലേക്കിനാ കാണും മൊട്ടിടും അനുരാഗക്കരൽ പോലെ മണ്ണിനും ഇവൾ പോലെ മാനം തുടിക്കും പാടാ കുട്ടനാടിൻ നീളം തീരനിരകളാടുന്നൊരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം പൊന്നാരിൻ കതിരിടും സ്വർണമണി നിറമോ കണ്ണിനു കനിയേകും നിറ പറയോ പെണ്ണാളു കൊയ്തവരും കറ്റ നിറ പൊലിയാ നെല്ലറ നിറയേണം മനസ്സുപോലെ ഉത്സവത്തൊടിതാളം കൊടിയേറ്റം മത്സരക്കളി വെള്ളത്തിറയോട്ടം പിന്നിനു മനമാകെ കതിരാട്ടം പാടാ കുട്ടനാടിൻ നീളം തീരനിരകളാടുന്നൊരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കായലലകൾ പുൽകും തണുവലിയും ഈറൻ കാറ്റിൽ ഇലഞ്ഞാറിൻ മുളയാടും കുളിരുലാവും നാട് നിറപൊലിയേകാമെന്നരിയ നീരിനാൾ പുതുവല നേരുന്നോരിനിയ നാളിതാ പാടാ കുട്ടനാടിൻ നീളം തീരനിരകളാടുന്നൊരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം താരാ തോ താരാ തോ താരാ Thank you. We would like to thank Samya Arora and all the board members for putting the show together.
We were very fortunate to have Ashamoni help us with this event, making it a memorable experience for everyone. We would also like to thank both Warren and Luann for their patience and time in making this event so beautiful. Please give another round of applause for all our participants, and will you all please join us on stage? We would appreciate if you kept the applause going until all the participants are on the stage. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मिले सुर मेरा तुम्हारा Shine तरज थई म्यान तरज इकवट बनिए सान तरज तेरा सुर मिले मेरे सुर के नाल मिलके बने एक नवा सुरताल मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं सुर का दरिया बह के सागर में मिले बदलांदा रूप लखे बरसन होले होले இசைந்தால் நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும் திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை Again, thank you very much for your patience, and food is served in the dining area, so we'll proceed there, please. Thank you again.